जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Javed Ali is speaking from the हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम ग्रुप 3 के बारे में मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं। जी, तो ये हमारे पास एक ये थ्योरम टाइप है। वो ये है कि अगर if A B belong to A और B belong to G, और G हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है G हमारे पास ग्रुप है। इसको यूँ लिख लेते हैं, इफ़ G हैज़ 3 एलिमेंट्स, इफ़ G हैज़, तो ये क्वेश्चन टाइप कह लो, थ्योरम तो नहीं कह सकते, क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन नंबर 1 कह लो, जो मर्जी कह लो। इफ़ G हैज़ 3 एलिमेंट्स, that is elements, G has 3 elements, then G is abelian, G is abelian। अगर G में 3 एलिमेंट्स हों, G में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हों तो G क्या होता है, abelian होता है। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ है, G में हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। G इक्वल टू, एक आइडेंटिटी ले लेते हैं, एक A ले लेते हैं और दूसरा B ले लेते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि G abelian है, मतलब हमने ये प्रूव करना है कि A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। ठीक है जी। तो इसके प्रूफ के लिए हम A और B को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अगर A और B को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आंसर G के अंदर में से आना है, तो या तो आइडेंटिटी आएगा, या A आएगा, या B आएगा। इसका मतलब है A और B अगर 2 एलिमेंट लें, कहाँ से, G से। ठीक है जी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये दिस। ठीक है जी। तो जो आंसर है वो या तो आइडेंटिटी आ सकता है, ठीक है जी, नंबर 1, ये दैट इज, इसको नंबर 1 कह लो, या फिर क्या आ सकता है, नंबर 2, ये आ सकता है कि A डॉट B इक्वल टू A आ सकता है, या नंबर 3 A डॉट B इक्वल टू B आ सकता है, क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट ही आना बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज A, B। ठीक है जी। तो हमने ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी बात ठीक है, ठीक है जी। अगर हमारे पास A डॉट B, इन तीनों में से एक बात ज़रूर ठीक होनी है। क्यों ठीक होनी है? क्योंकि A B का आंसर या तो आइडेंटिटी आएगा, या A आएगा, या B आएगा। क्यों? G ग्रुप है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी G में जाना है। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दो का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे जाना है, G में जाना है। ठीक है जी। सो वी हैव टू चेक दिस। ठीक है जी। ये उस वक्त पॉसिबल है यहाँ पे B की जगह पे आइडेंटिटी हो, A डॉट आइडेंटिटी इक्वल टू A, लेकिन B आइडेंटिटी है, B आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है जी। इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये उस वक्त पॉसिबल है, जब B की जगह पे, A की जगह पे क्या हो, आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी डॉट B, दिस विल बी इक्वल टू B, लेकिन A जो है वो आइडेंटिटी नहीं है। A की जगह पे आइडेंटिटी रखें तो फिर आइडेंटिटी डॉट B इक्वल टू B, लेकिन A आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है जी। सो 2 इज नॉट पॉसिबल, 2 जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। क्यों? बिकॉज A डॉट B नॉट इक्वल टू A। बिकॉज क्यों इक्वल क्यों नहीं है भाई जी? A जो है वो हमारे पास, B जो है वो आइडेंटिटी नहीं है। अगर A डॉट आइडेंटिटी होता तो वो इक्वल टू A होता। बिकॉज यहाँ पे लिख लें, बिकॉज
ए जो है वो आइडेंटिटी नहीं है। अगर ए आइडेंटिटी होता तो वो इक्वल टू किसके होता है, ए के, लिहाजा ये नॉट इक्वल टू ए है, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ए आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है जी, ये दोनों इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? ए आइडेंटिटी नहीं है। अगर ए आइडेंटिटी होता आइडेंटिटी डॉट बी तो इक्वल ये किसके हो जाता, ए के हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने की वजह ये है कि ये जो ए है ये हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। अब 3 को चेक कर लेते हैं। 3 इज़ नॉट पॉसिबल, 3 इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। इन व्हाट वे, वाई कि ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी। ठीक है जी, ये उस वक्त पॉसिबल था जब ए हमारा क्या होता, आइडेंटिटी होता। ए हमारा क्या होता, आइडेंटिटी होता, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू, सॉरी मादरस से, ये दैट इज इक्वल टू बी। तो ये उस वक्त पॉसिबल था। ये बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए है, तो ये ए उस वक्त आना था, इसका आंसर ए उस वक्त आना था जब बी इक्वल टू आइडेंटिटी होता, लेकिन बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, बी आइडेंटिटी नहीं है, बी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है जी, तो इज़ नॉट पॉसिबल ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी, ये उस वक्त बी आना था जब ए क्या होता, आइडेंटिटी होता, बट बिकॉज ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है जी, ए आइडेंटिटी नहीं है तो इस वजह से दिस इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर ए आइडेंटिटी होता ए डॉट बी तो देन विल बी इक्वल टू बी। तो ए हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, तो ये जवाब इस तरह 1 और 2 और 3 पॉसिबल नहीं है, 2 और 3 पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि ए और बी का आंसर कहाँ से आना है, जी के अंदर से आना है, जी के अंदर से आना है, क्योंकि जी ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इसका आंसर भी जी के अंदर से आना है। तो ना बी बनता है ना ए बनता है, तो इसका ए डॉट बी का आंसर क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। सो since G is group, since G is, that is G is group, G is a group, so A dot B must be equal to, इसके बराबर भी नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है, तो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। A dot B equal to A dot B, that is A dot B, A dot B equal to आइडेंटिटी। ठीक है जी, आगे हम दूसरी बी डॉट ए करते हैं, दूसरी साइड से चेक करते हैं, बी डॉट ए चेक करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर कोई, ये हमारे पास है कोई स्टेरिक, दैट इज स्टेरिक। ठीक है जी, अब हम बी डॉट ए चेक करते हैं, दैट इज बी डॉट ए, बी डॉट ए, दैट इज बी डॉट ए। इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, या वो आइडेंटिटी आ सकता है, या वो आइडेंटिटी आ सकता है, या वो ए आ सकता है। ठीक है जी, और या वो बी आ सकता है, या वो बी डॉट ए, और या वो बी आ सकता है। ठीक है जी, तो हम इन दोनों बातों को फेल करना है हमने। ये ए उस वक्त आना था जब बी ने क्या होना था, आइडेंटिटी होना था। ठीक है जी, और बी डॉट ए इक्वल टू बी उस वक्त होना था जब ए ने आइडेंटिटी होना था, ए बी डॉट आइडेंटिटी, दिस विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, बी डॉट ए इक्वल टू ए इज पॉसिबल, कब, ये कब पॉसिबल था, जब बी क्या होता हमारे पास, आइडेंटिटी होता। इफ बी नॉट इक्वल टू, सॉरी मदर से बी इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो बी आइडेंटिटी नहीं है, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। तो सो दिस इम्प्लाइज बी डॉट ए नॉट इक्वल टू ए। ठीक है जी, बिकॉज दैट इज because b not equal to identity, b not equal to identity।
ठीक है जी। अब आगे है हमारे पास, इसको देखना है, बी डॉट ए इक्वल टू बी इज पॉसिबल, इज पॉसिबल इफ इज पॉसिबल इफ हमारे पास जो ए है वो क्या होता, आइडेंटिटी होता, बी डॉट आइडेंटिटी इक्वल टू बी इफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इक्वल टू आइडेंटिटी। बट ये भी, ये ए आइडेंटिटी नहीं है, ए आइडेंटिटी नहीं है, सो बी डॉट ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज बिकॉज क्यों, ये जो हमारे पास ए है वो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। अब ये दोनों बातें फेल हो गई हैं, तो बी डॉट ए का कोई ना कोई आंसर आना है जो कि जी में से आना है, सो बी डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आएगा। ठीक है जी। इसको हम कह लेते हैं कोई टू टाइम्स स्टेरिक, तो फ्रॉम स्टेरिक वन एंड टू टाइम्स स्टेरिक, दिस इज टू टाइम्स स्टेरिक, बी डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो दिस इम्प्लाइज बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी, तो दिस इम्प्लाइज जी इज abelian, जी इज abelian, दिस इज, ठीक है जी। तो this proof has been completed, so the proof has been completed here. The next question here, next question, जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। वो है इफ़ ए बी बिलोंग टू जी, दो एलिमेंट हैं कहाँ से, जी, और जी क्या ग्रुप है। इफ़ दिस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो, तो देन जी क्या होता है, abelian, देन जी इज abelian, दैट इज abelian, ठीक है जी। अगर जी abelian हो तो फिर ये बात होती है, फिर ये बात होती है, अगर ये बात हो तो जी abelian है, अगर जी abelian हो तो ये बात होती है, ठीक है। लेट बी, इसका प्रूफ जो है वो हम शुरू करते हैं। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस बात को हम सपोज कर लेते हैं और इसको प्रूव करेंगे, सपोज दिस, इस बात को हमने सपोज कर लिया और उसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम टू टाइम्स लिख सकते हैं, ए बी डॉट ए बी, और इसको भी हम टू टाइम्स लिख सकते हैं, ए डॉट ए बी डॉट बी, ठीक है जी। तो बाय द राइट कैंसिलेशन लॉ, तो दिस एंड दिस, तो दिस इम्प्लाइज बी ए इक्वल टू ए बी, so this implies G is abelian, ठीक है। कन्वर्सली this is conversely, we have to suppose G is abelian, and we have to show, and we have to prove a b का स्क्वायर इक्वल टू a square b square, suppose G is abelian, that is G is abelian, ठीक है जी। now we have to show that this okay, this means if G is abelian, this means if AB belong to G, then according to abelian definition AB equal to BA,
That means AB equal to B. Okay. Now we have to multiply here by A. That is AB, that is ABA. That is this. So this is A square, this is A square B equal to AB, or this is A. That is. Now we have multiplied here by B, that is B, or that is B. So this implies A square B square. This will be equal to AB dot AB. That means that is 1, that is 1. So this is 2 times AB. This is AB ka square. AB square equal to A square B square. So this we proved. That is proved. Okay. The next question. If G has an element, G has only one element A of order 2, then if that is 3. If G has only one element, one element of order 2, If G has only one element, if G has only one element of order 2, if G has only one element A, that is G has only one element A of order 2, then AX equal to XA, AX equal to XA for all X belong to G. Okay, we have to prove this. Okay, G has only one element A of order 2. Proof. Since G has only one element of order 2, that is A times 2 times A equal to identity. That means order of A is 2, because A is we multiplied A 2 times A, then we give identity. So this means that is A square equal to identity. Okay, now we have to show this. But one point we have to note: G has only one element. This is only one element of order 2. Now let X A X inverse. This is X A X inverse. This square. This will be equal to 2 times. That is 2 times XA X inverse. 2 times. We have to write this 2 times. This is 2 times. Okay. Now we don't know that X inverse, that is X inverse, that is identity, that is A, that is X inverse. So identity multiplied by the group element, so we give group element XA A X inverse. So this will be equal to X, this is A square X inverse.
So we know that A square equal to identity. A square equal to identity. So this is identity, that means x inverse. This is equal to x inverse whole square. So this will be equal to x identity multiplied by x. So this is x inverse. So this is equal to x inverse whole square. This is group element and the inverse of this element. So this gives the identity. So this implies x inverse whole square, that is equal to identity. So this is an element of G of order 2. Element of G, because x belong to let x belong to G. So x inverse belong to G. Okay. So x belong to G. So this means x dot a belong to G by the closure property. So this is an element of G, where G is group. So by the closure property, the product of these two elements belong to G. So this implies x inverse this must belong to G, because G is. So this is an element of G. So this is an element of G. This is an element of G. So this is an element of G. So this is an element of G of order 2. This is an element of G of order 2. But we have said G has only one element of order 2, which is A. G has only one element A of order 2. G has only one element A of order 2. Okay. So we know that, since we know that A square equal to identity. Okay. So G has only one element of order 2. So this must be equal to. So we can write here, since G has only one element of order 2. G has only one element of order 2. So this is an element of G, and this is an element of G. So G has only one element A, which is A of order 2. Okay? So these elements must be same, because G has only one element A of order 2. So these element must be same. So this implies, so that is we have to write here G has, so x inverse, this must be equal to A. So by this x, so x inverse and x, this is the identity, x equal to Ax. So this is our required result, which we have proved. Okay, now we're going to the next question. Now we're going to the next question.
If we have to note, if AB power n equal to an bn, okay, then this is not possible that G is abelian. If AB power n, this is equal to a raised to power n, b raised to power n, then this may or may not be G is possible, G is abelian. So, but if we let this is not implies this statement not implies that G is abelian. Okay, but if G is abelian, then this is possible. If this a b raised to power n equal to a raised to power n b raised to power n, then this statement does not imply that G is abelian. If G is abelian, then this is possible. But for consecutive three numbers, then G is abelian. For consecutive three numbers, then G is abelian. Okay, we have to write here. This is if a b raised to power n equal to a raised to power n, that is b raised to power n, then G is abelian. For consecutive three numbers, consecutive three numbers, three numbers for consecutive three numbers n. For consecutive three numbers n means n plus 1, n plus 2. For consecutive three numbers, then G is abelian. If this occurs, then G may or may not be abelian. But for the consecutive three numbers, means if this is 1, 1, 2, and 3, then G is abelian. N equal to 1, n equal to 2, that means n equal to 1. That means n plus 1. That means n plus 2. N is 1, 1 plus 1, that is 2, 1 plus 2, that is 3. For three consecutive numbers, G is abelian. Or this is for all. It is for all A, B belong to G. We have to prove let n plus 1, n plus 2 be three consecutive numbers, three consecutive numbers. Okay, then this statement will be of this form: a b raised to power n for n equal to a raised to power n, b raised to power n. Number 2, a b raised to power n plus 1, that is n plus 1 equal to a raised to power n plus 1, b raised to power n plus 1. Number 3, a b raised to power n plus 2, that will be equal to a raised to power n plus 2 dot b raised to power n plus 2. The a b raised to power n, a raised to power n, b raised to power n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 2, n plus 2, n plus 2. That's okay. This will be of this form. Okay, we have to take this
2 implies 2. This is 2 implies this. A b raised to power n plus 1. This will be equal to a raised to power n plus 1, b raised to power n plus 1. So this implies a b raised to power n dot a b raised to power 1. That means n plus 1, n plus 1, that is n plus 1. Okay. Base here same, a raised to power n dot a, b raised to power n dot b. So by 1, a b raised to power n, a raised to power n, b raised to power n, a raised to power n, b raised to power n, a b. This will be equal to a raised to power n dot a, b raised to power n dot b. This is by 1, by 1. This is a b raised to power n, a raised to power n, b raised to power n. So this implies by the left cancellation law. So this is this. So this implies b raised to power n a equal to a b raised to power n. So this is equation number 4. That is okay. That's the equation number 4. Okay. That means now by equation number 3 becomes this is a b raised to power n plus 2, that will be equal to a raised to power n plus 2, b raised to power n plus 2. So we can write here a b raised to power n, b raised to power n, a b whole secure. This will be equal to a raised to power n dot a square, b raised to power n dot b square. So this implies by the equation number 1, a b raised to power n, a raised to power n, b raised to power n, a raised to power n dot b raised to power n. This is. So 2 times we can write here ab dot ab. So this will be equal to a raised to power n dot a, that we can write here a raised to power n a square, b raised to power n, that is b square. So this will be cancelled. This implies so b raised to power n, a b, that is b equal to a square. That means a square means 2 times a dot a, b raised to power n, that means 2 times b dot b. So by the right cancellation law, so this gives b raised to power n a, ba, that is ba equal to a, that means a b raised to power n, a b raised to power n dot b. That is b. Okay. That is b raised to power n ba
So this implies b raised to power n and a. This implies my equation number 4. This implies a b raised to power n ba equal to a b raised to power n dot b by 4. So this is cancel. This is cancel. So this implies b raised to power n ba equal to a b raised to power n dot b. So we can a b raised to power n, a b raised to power n, that is equal to b raised to power n a. This implies b raised to power n ba equal to a b raised to power n. A b raised to power n equal to b raised to power n a dot b. So this will be cancelled. This will be cancelled. B equal to AB. That is B equal to AB. This implies G is abelian. G is abelian.